Let me share the screen. अब ये जो बाकी दो यूनिट्स हैं इसमें हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे हम टू डिफाइन द कर्वेचर ऑन अ सरफेस एट अ पॉइंट. किसी पॉइंट पे कैसे हम डिफाइन करें उस सरफेस का कर्वेचर. इसके लिए जो पहली बात हम करेंगे वी टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल नॉर्मल सेक्शंस. नॉर्मल सेक्शन तो यूजुअली सेक्शन होता है the curve of intersection of a surface and a plane. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस है, इसको अगर मैं किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करता हूँ, ये प्लेन है, प्लेन से इसको काटता हूँ, जो इनकी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, अगर तुम इमेजिन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो हमेशा एक सर्कल होगा. तो इसको हम कहेंगे सेक्शन ऑफ दिस, सेक्शन ऑफ, वैसे यहाँ दिखता नहीं क्योंकि ये 3D नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम इमेजिन करोगे इफ यू कट the surface of a sphere by a plane, then the curve of intersection यानी something that they are going to intersect जो points बनेंगे तो वो curve एक ये क्या बोलते हैं, एक सर्कल होगी. Similarly, if I took a cylinder, I want you to imagine this. अगर तुम्हारा जो curve of intersection हो, मतलब इस तरह से, तो अगर तुम इस तरह से इसको किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराओगे, अगेन इट वुड बी, जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो एक सर्कल होगी. तो इसको हम बोलेंगे सेक्शन ऑफ दिस सरफेस बाय दिस प्लेन. बट अगर तुम ऐसे इंटरसेक्ट करोगे किसी प्लेन से विच इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर, देन इट वुड बी अ पेयर ऑफ लाइंस. और तुम्हें पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में व्हाट वी कॉल कोनिक सेक्शंस. कोनिक सेक्शंस कौन कौन आते हैं हमारे घर? कोनिक सेक्शंस बेसिकली जो मेन है वो अपना है इलिप्स, है ना, देन यू हैव पैराबोला, देन यू हैव ऑफ कोर्स हाइपरबोला, जो तुम पढ़ते हो लोअर क्लासेस में. इनको कोनिक सेक्शंस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर आप एक कोन की सरफेस लो और उसको प्लेन से इंटरसेक्ट करो एट डिफरेंट पोजीशंस, तो यू गेट दीस 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स. अगर तुम दो ऐसा इस टाइप का कोन लोगे, अगर इसको पैरेलल रखोगे जो कोन का जनरेटर है, तो इमेजिन करोगे तो ये जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी तो इट विल बी अ पैराबोला. और अगर इस तरह से काटोगे इसको प्लेन से, जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो एक एलिप्स होगी. और अगर उसी को इस तरह से ले जाओगे बिल्कुल फ्लैट, परपेंडिकुलर टू द जनरेटर, तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगी एक सर्कल. इसी तरह से अगर तुम इस तरह से इनके बीच वाली जो कंडीशन है, यानी इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करोगे, तो तुम्हें दो टुकड़े मिलेंगे कर्व के. एक ऊपर वाले हिस्से पे, मतलब मैं कह रहा हूँ एक प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यू विल गेट अ हाइपरबोला. दैट्स व्हाई वी कॉल देम कोनिक सेक्शंस. दे आर सेक्शंस ऑफ अ प्लेन, दे आर सेक्शंस ऑफ अ कोन बाय अ प्लेन, देयरफॉर वी कॉल देम कोनिक सेक्शंस. तो नॉर्मल सेक्शन क्या होता है? नॉर्मल सेक्शन ऐसा होता है कि सपोज मैंने कोई सरफेस ली, करते हैं, मान लो मैंने कोई सरफेस ली, सरफेस मतलब उसका एक हिस्सा, कोई पैच लिया. अब यहाँ पे एक वेक्टर है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल वेक्टर. तो अब मैं ऐसे प्लेन लूंगा जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, राइट. तो इस तरह से एक प्लेन है जो इसको इंटरसेक्ट करता है, लेकिन प्लेन ऐसा होना चाहिए इट शुड कंटेन दिस वेक्टर, दिस सरफेस नॉर्मल एट दैट पॉइंट. तो वो जो कर्व बनेगी ना, वो एक कर्व में काटेगा इसको. जो प्लेन है इसको जब काटेगा इस तरह से, तो जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगी, लेकिन प्लेन वो दैट वुड कंटेन द सरफेस नॉर्मल एट दैट पॉइंट. सरफेस नॉर्मल का मतलब ये टेंजेंट प्लेन और उसके परपेंडिकुलर प्लेन. तो ये जो प्लेन अगर इस तरह से है दैट इट कंटेन्स दिस n वेक्टर ऑफ द सरफेस, तो ये जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेक्शन एट p. ऑफ कोर्स p वो पॉइंट है जहां पे हमने ये नॉर्मल ली है.
So very straightforward definition, है ना? तो इस तरह से हमें एक कर्व मिलती है। अगर हम एक प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगे at a point such that it contains that the surface normal at that point, and जो curve of intersection है उसको हम बोलते हैं normal section. So let me first define it. A plane drawn through a point of a surface cuts it in a curve. ये हमेशा इसको curve में काटेगा in a curve called the section of the surface. If the plane contains the normal to the surface, if the plane contains the normal to the surface, at that point, the curve is called the normal section at that point. ठीक है? So इसकी definition होगी the principal normal of the normal section. चलो ये भी लिखता है. The principal normal of the normal section is parallel to the surface normal. Normal to the surface. तो अभी कर्व है तो इसका अपना क्या, हमारे पास एक कर्व की तरह हम इसको सोच सकते हैं जहां पे टेंजेंट है, प्रिंसिपल नॉर्मल है और पाई नॉर्मल है. अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये जो n और ये n होगा ये आपस में पैरेलल होंगे. दैट्स ऑब्वियस क्योंकि टेंजेंट होगा इसी प्लेन में लाई करेगा और n जो है सरफेस नॉर्मल का वो या तो इस डायरेक्शन में होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सरफेस कैसी है. ऐसे भी हो सकते हैं सरफेस तो तुम्हारा ये अकॉर्डिंगली मतलब दे विल बी पैरेलल. एंड फर्दरमोर अगर तुम इस पे ध्यान दोगे वो ये है कि अब हम जाहिर सी बात है ये जो नॉर्मल सेक्शन है इट्स अ कर्व, तो ऑलरेडी हमें पता है कर्व का कर्वेचर क्या होता है, तो हम एक्चुअली में अब इसका कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं. इस कर्व का, इस नॉर्मल सेक्शन का, a particular curve on a surface which is the intersection of the plane that contains the surface normal and the surface. अब जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे कितने नॉर्मल सेक्शन है, एक तो ये है. लेकिन अगर मैं प्लेन को ऐसे ड्रॉ करूं, मतलब लेट मी कोशिश करता हूं, अगर ऐसा प्लेन होता तो ऑफ कोर्स इट अगेन कंटेन्स दिस. अगर मैं इसको रोटेट करूं, मैं कह रहा हूं इस प्लेन को अराउंड दिस सरफेस नॉर्मल, तो एक और नॉर्मल सेक्शन बनेगा ये वाला. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एंड दिस प्लेन व्हिच अगेन कंटेन्स द सरफेस नॉर्मल. तो जितना हम इसको रोटेट कर सकते हैं तो उतने ही डिफरेंट नॉर्मल सेक्शंस हमें मिलेंगे एट पॉइंट पी. एक्चुअली इनफिनिटली मेनी, यू जस्ट हैव टू रोटेट वन, बिकॉज़ रोटेशन से क्या होगा, इट वुड स्टिल कंटेन दिस सरफेस नॉर्मल, दिस प्लेन. सो द कर्व जो ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी वो होगा अपना नॉर्मल सेक्शन. सो एनीवे, नेक्स्ट, now we can find the curvature of this normal section. And we can find it in terms of the first and second order fundamental magnitudes. Okay, so let us start. Next page. Okay. Curvature of a normal section in terms of the fundamental magnitudes. In terms of the fundamental magnitudes, and a first and second order fundamental magnitudes जो हैं E, F, G and element.
So let K sub n denote the curvature of the normal section. तो यूजुअली अब हम क्या करते हैं, हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है कि जो कर्व होती है उसमें जो अपना जो कर्वेचर होता है, इट्स अ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व में क्या होता है, यू कैन असाइन साइन टू द कर्वेचर। और जो नॉर्मल सेक्शन है, इट लाइज इन अ प्लेन, द प्लेन कंटेनिंग नॉर्मल। तो इसको हम एक साइन असाइन करते हैं। जैसे हमें पता है, तो जैसे तुम्हें क्या होगा ना प्लेन कर्व्स में, वी टॉक अबाउट दैट साइन कर्वेचर व्हिच कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। सो देन के इन इज पॉजिटिव, हम ऐसा मानेंगे कि के एन इज पॉजिटिव। हम इसको, उससे कोई एसेंशियल फर्क नहीं पड़ेगा। When the curve is concave, when the curve is concave on the side, वो surface का side, on the side which n points out, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा surface normal, अब तुम्हें surface normal तो RU जो भी मतलब जो हमारा normal section है, तो अगर इस तरह से है कर्वेचर, मतलब इस तरह से कर्व है, और यहाँ पे जो सरफेस नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और सरफेस ऐसे है, तो हमारा जो नॉर्मल सेक्शन है एट दिस पॉइंट, हम मानेंगे कि इसका जो नॉर्मल कर्वेचर है इस नॉर्मल सेक्शन का, अगर n इज कमिंग आउटसाइड एंड उसी कॉन्केव है उस तरफ, जिस साइड से n बाहर आ रहा है, तो हम मानेंगे के एन पॉजिटिव है, राइट। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि सरफेस नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और के एन इस तरह से है, तो उसको मानेंगे नेगेटिव है। इट्स जस्ट अ साइन कन्वेंशन, इसको ज्यादा तो महंगा मत दो। एनी नाउ अगर मैं लेता हूँ टेंजेंट वेक्टर, नाउ उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, जो लिखते हैं लेट टी बी यूनिट टेंजेंट वेक्टर to the normal section, yeah, to the at the point P on the surface, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि T dt लिख लो R double dash is equal to dt by ds, that is equal to T dash, और हमें पता है सेरेफरे ने कहता है it should be the curvature of the surface times the principal normal vector. It is सेरेफरे इक्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ इस कर्वेचर का नाम kn दिया तो हमने kn लिखा, ठीक है। अदरवाइज हम लिखते हैं k, मतलब नाम हमने कर्वेचर का kn रखा तो इसीलिए k, which is the same thing as knn, कि जो हमने चॉइस की है n और n की डायरेक्शन सेम रखी है। वही मतलब मैंने कहा ना वो उल्टी भी हो सकती है, लेकिन हमने इस तरह से इस kn को कहा कि kn तो पॉजिटिव रहेगा, kn को हम पॉजिटिव तभी मानेंगे जब ये n और m आपस में अलाइन करेंगे। एनीवे, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं जो मेरा r डबल डैश है that is equal to k sub n times the unit normal vector to the surface. So if I take the dot product with n, this would be kn, n dotted with n, लेकिन n is a unit vector, so this is just kn. So इस तरह से I can say therefore curvature of the normal section जो curve है surface पे, kn is equal to n dotted with r double dash. Let's call this equation. Now we want to evaluate this r double dash. उसके लिए हम क्या करेंगे? What we do is this. हमारे पास एक surface है
इस पे कोई कर्व है, राइट? अब अगर ये कर्व है, इट इज अ फंक्शन ऑफ से यूनिट पैरामीटर आर्क लेंथ जो इसकी है, so but it also lies on the surface, so it is also part of the surface, so it should also, these points on this curve, this normal section should, since they also lie on the surface, they must satisfy the equation of the surface also. So therefore I can say R of S would be equal to the curve, the normal section, the equation of the normal section should be of the form of this. R should be some composition U at S, V at S. मेरे कहने का मतलब है it is R at S, it is as well as R at UV. ठीक है ना? So it depends upon S, it also depends upon UV because it lies on the surface. It's a curve, therefore R at S. It lies on the surface, therefore R at UV. अब अगर इन दोनों को reconcile करना है, अगर ये दोनों बराबर है, then U and V must depend upon S. And U must be a function of S, V must be a function of S. In that case, using the chain rule, dr by ds by chain rule should be del r by del u into du by ds plus del r by del v into dv by ds. This is just chain rule. So that means r dash is equal to r sub u dash plus r sub v dash. But we want to evaluate r double dash, right? So again, differentiating it with respect to this whole thing, इसको अगर हम फिर से differentiate करें, मेरे कहने का मतलब है r double dash is the same thing as dr dash by ds, which is equal to d by ds of u dash plus rv v dash. But again, applying the chain rule by the same way, so what you get is del by del u of r sub u dash plus r sub v dash into du by ds plus del by del v of the same thing, r sub u dash plus r sub v dash into dv by ds. Now we just do the differentiation. क्या मिलेगा यहाँ डिफरेंशिएशन करके? तो इसको जरा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले आएगा u के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट, राइट? और ऑफ कोर्स u डैश को ऐसे ही रखेंगे, फिर ru को ऐसे ही रखेंगे, you will get u double dash, right? फिर इसी तरह से you should have r u v dash plus then you should have r v, what should I have? It is v double dash whole multiplied by, I think, u dash, differentiating with respect to s. Similarly, you should have r u v u dash plus r u. I should have this with respect to क्या मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? Yes, मैंने गलत किया. I will differentiate this with respect to v. मैंने काम गड़बड़ कर दी. हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, because this is a function of two variables. जब मैं इसको partially differentiate करूँगा, तो यहाँ पे फिर से वो chain rule लगाना पड़ेगा. यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद मैंने गलत किया. ओके, अब देखो ये जो है, यहाँ पे थोड़ा हमें लगाना पड़ेगा फिर से chain rule, because this function जो है, this is a function of two variables. यानी जब मैं ये कहूँगा del by, मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ r sub u को, ठीक है, और साथ में मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, I made some mistake somewhere, तो मैंने यहाँ ऐसे लिया, वो सही है, तो then I applied my chain rule because this thing is a function of u and v, it's fine, and this thing is a function of s, and I'm partially differentiating with respect to u. Okay. Okay,
So what you get is this. Some mistakes on there. R dash chain rule, that's fine. ठीक, मैं get here R double dash. हाँ, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए. तो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, तो यहाँ मैंने ठीक किया था शायद. नहीं, बेटर है कि पहले इनको अलग कर दो. वही मैं पहले ही अलग करते हैं. मतलब I just use the sum rule. ये होना चाहिए d by ds of r u dash plus d by ds of r u r v dash. चैन रूल बाद में लगाएंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे. So that would be u double dash, right, into ru plus u dash. मेरे कहने का मतलब, चलो एक बार यहाँ लिखते हैं. मैंने प्रोडक्ट रूल अब यूज किया, ये plus u dash into d by ds of r at u. अब सही. Then similarly I should have rv into d by ds of b dash, right, plus then I should have, right, I should have what here, I should have b dash को ऐसे ही रखो और d by ds of rv. अब सही हो गया. हाँ, अब ये तो है u डबल डैश इंटू r, तो इसमें फर्दर कुछ नहीं करना. इसी तरह से ये I should have plus v डबल डैश इंटू आर वी. ये दोनों टर्म्स तो सिंपल थे, हमें इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना था. लेकिन यहाँ पे r सब यूज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो हमारा चेंज बदल, इट शुड बी u डैश प्लस u डैश मल्टीप्लाइड बाय del u of r u into du by ds plus del v of r sub u into dv by ds. ये हमारा चेन रूल है. प्लस ऑफ कोर्स अब ये v dash into del by del u of rv into du by ds plus del by del v of rv into dv by ds. अब सही है. नहीं, मैं r डबल डैश इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, तो ये फाइनली यहाँ पे अगर मैं लिखूं, this is u double dash r sub u plus v double dash r sub v plus u dash into, अंदर क्या बचेगा, इसको दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो, so that would be r sub u into u dash plus r sub uv into v dash, then plus v dash into r sub uv into u dash plus r sub vv into v dash. So अब साफ हो गया. तो मैं यहीं पे करना चाहूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूसरे पेज पे लिखना मुश्किल हो जाएगा. So this would be essentially, अब u dash को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे है u dash square, so it should be r sub u dash square plus r sub uv u dash v dash. Again a good term r's because mixed partial derivatives are same. U dash v dash, then I should have r sub v dash square, then I have this term u double dash r sub u plus v double dash r sub v. तो ये है अपना r double dash, because it lies on the surface, so we have to do all this thing. Okay, of course ये 2 times मैं इसको लिख सकता हूँ. चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. यानी मेरा r double dash जो है finally it should be of this form. It should be, let me write it, u double dash plus r sub v double dash plus, I should have u dash square plus twice u dash v dash plus rvv into v dash square. So ये है अपना क्या बोलते हैं हमारा ये
what is this, इसको बोलते हैं ना r double dash. Now therefore from 1 k sub n है बराबर r double dash dot product with n, right? अगर मैं इसका right hand side का लूं, which is the same thing as, चलो लिख ही देते हैं, r u u double dash plus r v v double dash plus r sub u u u dash square plus twice r sub u v u dash v dash plus r v v v dash square whole dotted with this unit vector n. Now n जो है it is perpendicular to ru as well as rv, तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा, तो पहले में दो टर्म्स तो 0 मिलेंगे. Then I have ru dotted with n u dash square plus twice ruv dotted with n u dash v dash plus r sub vv dotted with n v dash square. Now that is just, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट देखूं, this is nothing but l u dash square plus twice m u dash v dash plus n v dash square, where L, M, N are second order fundamental magnitudes. Okay, so this is what I have. So okay, let me फिर से मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, but this can be written as n du by ds का whole square plus twice m du by ds dv by ds plus n times dv by ds का whole square. Now which we can write as L du square plus twice in the differential form, ऐसे लिख सकते हैं उसको, whole divided by ds square. और तुम्हें याद हो जो ds square है, it is square of this tiny length on the surface. So therefore this is the same thing as the first fundamental form, and I should get LD square plus twice m du dv plus n dv square divided by e du square plus twice f du dv plus g dv square. So to curvature of the normal section in a particular direction, यानी यहाँ पे du by dv would is a change in the increment, जो हम जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में, so this represents the direction, क्योंकि normal sections तो मैंने बोला infinitely many होंगे. अगर मेरे पास surface है यहाँ पे कोई patch, so then I have the surface normal in this direction, and जो मेरा normal section एक ये है, right? तो ये होगा, तो this is a particular change of increment है. मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, तो मैंने uv लिया होगा डोमेन में चेंज, तो अगर मैं यहाँ से तो कोई और du dv के दूसरे वैल्यू के लिए मुझे एक और नॉर्मल सेक्शन मिलेगा और उसका कर्वेचर अकॉर्डिंगली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो l m n ये तो इवैल्यूएट होते हैं एट अ पॉइंट, लेकिन du dv would give us different, तो उनके वैल्यूज हमें डिफरेंट डायरेक्शंस देंगे नॉर्मल सेक्शंस के, और उनका कर्वेचर इस फॉर्मूला से मिलेगा. ओके, सो दैट वाज आवर कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन. तो इसको हम नॉर्मल कर्वेचर भी कहते हैं, वही है. Okay, write down that as a definition. अब हम ऐसे भी सोच सकते थे थोड़ी देर के लिए, अगर मैं चूंकि kn जो बराबर है, it is actually n dot r double dot, है ना. अगर मेरे पास कोई कर्व है, उसका कर्वेचर हमने कैसे डिफाइन किया था, that was the length of this thing. This is the definition of the क्या बोलते हैं curvature of a curve. So in particular the curvature of the normal section. अब
अगर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इट इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ दिस कर्वेचर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस नॉर्मल। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे ये n है और ये अपना कर्वेचर वेक्टर है, जैसे अपना r डैश होगा, तो कोई कर्व लेंगे हम, तो यानी अगर अब मैं कोई भी कर्व लूं, नॉट नेसेसरली नॉर्मल सेक्शन, ठीक है ना, उसका अपना r डबल डैश होगा, है ना, और वहां पे सरफेस नॉर्मल भी होगा। तो अगर मैं उस कर्वेचर का कंपोनेंट में उसकी प्रोजेक्शन लूं ऑन टू द वेक्टर n, that would be the curvature of the normal section at that point। मेरी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं अगर मैं उस पॉइंट से कोई भी कर्व लूं और उसका अपना r डबल डैश है, फिर मैं लेता हूं ये प्रोडक्ट, that would give me the curvature of the normal section at that point। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर आप कोई कर्व है, तो मैं कहता हूँ, मतलब नॉट नेसेसरली नॉर्मल सेक्शन, मेरी बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स इट इज द कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन, बट थिंक अबाउट कि तुम्हारे पास अब कोई भी कर्व है, उसका अपना r डबल डैश है, राइट? तो हम कहेंगे उस कर्व का नॉर्मल कर्वेचर है कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस टू द नॉर्मल सेक्शन। तो उस वक्त हम कहेंगे कि इस कर्व का नॉर्मल कर्वेचर ये है। तो उसी को मैं एक डेफिनेशन में लिख देता हूं, नॉर्मल कर्वेचर। The normal curvature of a curve at a point is the curvature of the normal section at that point। तो मेरे कहने का मतलब ये जो r डबल डैश है, हम इसके दो, मतलब हम इसका वही मतलब कंपोनेंट लेंगे which lies along n, क्योंकि एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो उस कंपोनेंट को हम कहेंगे उसका नॉर्मल कर्वेचर। सो लेट normal curvature, let a point P with position vector r at uv be on the surface r is equal to r at uv, and consider a curve r is equal to rs passing through that point, through the point P lying on the surface। The component of the curvature vector by that I mean r double dash along the normal to the surface is defined to be normal curvature of the curve at the point of the curve at that point। And is given by, of course, kn is equal to r double dash dot with n। तो थोड़ा सा ये फर्क है इसमें, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। I hope you understood this point। Now we come to a theorem called Monia's theorem। तो let me write down MUS इसका नाम है। पहले मैं ये बता दूं, अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा था एक सरफेस है, तो यहाँ पे एक सरफेस नॉर्मल है, इसका एक वेक्टर, और अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ which contains this surface normal, I get a curve of the intersection of the surface and this plane, जिसको मैंने कहा है नॉर्मल सेक्शन। अब जाहिर सी बात है, देयर कुड बी अदर सेक्शंस, में एक प्लेन ले सकता हूँ which is at some angle to this, मतलब जो n को कंटेन नहीं करता इसी पॉइंट पे, तो उस वो भी एक कर्व होगी, राइट?
where it does not contain the surface normal. It's at an angle to this plane that contains the surface normal. It does not contain the, तो उसको हम कहते हैं oblique section. उसका यानी जो normal section नहीं है वो oblique section है. And it's at a मतलब उसका एक angle. It's not does not contain. It's at an angle to the surface normal end. So Monia's theorem is regarding the curvature of these oblique sections. So if it states that if Kn and K are the curvatures of normal and oblique sections through the same tangent line, N and theta is the angle between these two sections, these two curves. Angle between these sections, then Kn is equal to K cos theta. इसको इंशाल्लाह हम कल करेंगे. मुझे थोड़ा सा आज काम है. So let me. और मैं चाहूंगा तुम नेक्स्ट टाइम भी तुम रेडी रहो. कल तुम नहीं थे.